Good evening, everyone. Warm welcome. May I have a reply in the comment section that I'm audible, visible? I welcome you all in a very important session. Okay, that means I'm audible, visible, everything is fine. So I welcome you all in the next session of Finance Current Affairs, where we will be discussing the Finance Current Affairs for 25th to 27th of June 2025. As you all know that this session is a must-watch session for everyone, those who are preparing for RBI Grade B examination or maybe PFRDA or SEBI examination, because this session is going to help you in order to answer all the current affairs based on the financial sector. So before we start the discussion, may I have a reply in the comment section? Are we good to go? So that we can begin the discussion. Thank you so much. So let's begin. Guys, if you remember in the previous session, we have started our discussion on a very important topic, on a very important master direction, which was given by RBI. The name is Project Finance Direction, given by RBI. Related to this Project Finance Direction, most of the things were discussed in the previous session itself, and the rest of the news which were not discussed in the previous session, I will be discussing them in this particular session, and we'll first complete this master direction and then I have multiple news for the current day as well. Are we good to go? Nandini, if you are new in this particular session, then I would request you need to stay in this session for at least a week. That means for next 3 more sessions, then only you will be able to understand what kind of preparation, what kind of finance current affair coverage is basically done in this session. It will be impossible to understand the things if you are going through, or if you are just watching this session once. That will not be very helpful. So you need to watch it at least for 3 days so that you can understand the entire concept of this particular session itself. Okay, so as I was saying, guys, I hope you all were present in the previous session, and in the previous session we have discussed about a term that is project finance. Today I will be completing that master direction, but before I move forward to complete this master direction, just give me yes sir in the comment section. Those who have, just give me yes sir in the comment section. Those who have gone through with this particular PDF which I have shared with you in the previous session, those who have watched the previous session, so that I can know that majority of the students, they are aware of this particular, news, so that I can go on in that respective manner itself. Just give me a second, huh? Okay, so if you have gone through with this particular news in the previous session, then let's conclude this discussion. Please pay attention. Guys, whenever we talk about a project finance, we all know that project finance basically means whenever a bank or a company or an organization is providing loan, whenever loan is provided for long-term project. The moment I say this term long-term project, so the project which has long-term gestation period. Gestation period means the completion period, and in the case of project finance, repayment will initiate after completion of the project. So once the project is completed, then only the repayment will be given. That means the amount will be paid back from the same project earnings itself. Now, related to a particular project, we have few stages, we have few phases which I would like to discuss with you all. So please pay attention, guys. I'll conclude the entire discussion on this particular slide itself related to the entire
project finance topic. So the first phase we have is the design phase. The first phase we have is the design phase. The second phase we have is the construction phase. The second phase we have is the construction phase. And the third and the last phase we have the operational phase. We have is the operational phase. Now the question over here is, sir, in case of a project, how these three phases are important? So the first phase is the design phase, where company, for example, I'll take an example to discuss this particular point. Let's say there is a contractor, and this contractor has got a contract to build a bridge, and the total project cost is 1,000 crore rupees, and against this 1,000 crore rupees lending is done by the lenders और borrowing is done by the borrowers. ठीक है जी, समझ आई ना बात? अब इसमें ध्यान से सुनना. अब हुआ क्या कि सबसे पहले जब government has given you the approval that you are the contractor who will be constructing this particular bridge, you will design the entire bridge, then you will discuss the entire plan, how the construction will be done, what kind of construction material will be used, everything is discussed. Then all the approvals required to start the construction, all the approvals related to land acquisition, all that is need to be taken in the design phase only. In the design phase itself, the discussion is done that what will be the source of finance, कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा है वो कहां से आएगा, और ये कंस्ट्रक्शन फेज कब स्टार्ट होगा. सो इट विल स्टार्ट ऑन construction phase will start on date of financial closure. ये date of financial closure क्या है? So date of financial closure is a situation where 90% of the project cost funding source is finalized. Funding source is finalized or fixed. इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 90% पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा इक्विटी से आएगा, कितना पैसा डेट से आएगा, या कितना पैसा ग्रांट्स के फॉर्म से आएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट. वंस इट इज फिक्स्ड, वंस इट इज डिसाइडेड, वंस द पार्टीज दे आर लीगली बाइंडेड to make this repayment in the near future or to infuse the funds in the near future, that marks the date of financial closure. और उस financial closure के बाद you will enter into a new phase, and that new phase is known as construction phase. ठीक है जी. अब once the construction is completed, then there is a date set which is preset at the time of initiation of the project. We call it as date of commencement of commercial operations. यानी ये वो डेट है जिस दिन के अगले दिन या जिस डेट से ऑपरेशनल होगा आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. यानी ये जो ब्रिज है, this bridge will be open for the public will be utilizing this bridge, and public will be charged with toll tax while using the services of this particular bridge. We call it as operational phase. अब हो सकता है कि ये जो date of commencement of commercial operations है, first date which is announced at the time of starting of the project, we call it as original date. Then if it is extended, if required, then we call it as extended DCCO, and after extension there could be extension once or twice, and lastly is the actual date on which actually the operation starts. अब जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इस ऑपरेशन फेज में, ये जो ऑपरेशन फेज है, this is the operation phase where repayment of the loan is done. This is the operation phase where repayment of the loan is done. अब जब आप रीपेमेंट ऑफ द लोन की बात करेंगे तो यहां पे एक टाइमलाइन है. व्हाट इज द टाइमलाइन? सर, रीपेमेंट ऑफ द लोन इज नीड टू बी डन विद इन 85% ऑफ प्रोजेक्ट economic life. Now the question is, what is project economic life? So let's say मैं borrower हूं, I am the borrower who has borrowed the funds to construct the bridge. Government has given me 20 years. कि after completion you will be using this bridge for 20 years. That means you will be collecting toll on this bridge. Entire toll will be the income of the contractor for 20 years. So economic life of the bridge for the contractor is 20 years. And here is the criteria
that the repayment will be done within 85% of the project economic life, including the moratorium scenario. Including the moratorium scenario. So in that particular case, this is going to be up to 17 years की 17 साल के अंदर अंदर you have to do the repayment. ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो just give me yes sir so that I can move ahead. If it is clear in this point, just give me yes sir so that I can move ahead. If it is clear, just give me yes sir. ठीक है जी, क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा. अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट इज क्रेडिट लिमिट, सॉरी दैट इज क्रेडिट इवेंट. अब ये जो क्रेडिट इवेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म दैट इज क्रेडिट इवेंट? सो क्रेडिट इवेंट इज अ सिचुएशन वेयर द लेंडर फील कि जो लेंडिंग है दैट विल नॉट बी रीपेड, द लोन गिवन बाय द बैंक or the lender will turn into NPA. So that point which trigger or which make the lender feel that I won't be able to recover my funds in the near future, we call it as credit event. And this credit event will not only occur if the loan repayment is not done. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर once your project is completed, now your project is operational, and during the operation if project repayment or the repayment of the loan is not done, that is the only case which results in credit event. No, beside this, before completion of the project, before completion of the construction phase, if the project constructor, the contractor approaches to the lender and says कि sir project थोड़ा लंबा होगा, I need to extend the project for few years. So whenever there is a call for extension, whenever there is a delay in delivering the project, whenever there is a delay in handing over the project, whenever the delivery of the project is unknown, all these situations, all these conditions, they fall under the category of credit event. अब अगर credit event हुआ तो क्या होगा? और मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो credit event है ये कौन से phase में हुआ है? Sir, it has witnessed or it has been witnessed in the construction phase itself. It has been witnessed in the कंस्ट्रक्शन फेज इटसेल्फ. अब अगर कंस्ट्रक्शन फेज में बैंक फील्स देयर इज अ क्रेडिट इवेंट, देन बैंक विल मार्क द डेट ऑफ क्रेडिट इवेंट. तो ये क्रेडिट इवेंट की डेट है जहां पे कंस्ट्रक्टर ने कहा, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, आई हैव टू एक्सटेंड द DCCO, आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज पर द गिवन टाइमलाइन. So this is the day where we can mark it as credit event. और जैसे ये credit event mark होगा, जैसे ये credit event mark होगा, अब बैंक के ऊपर, lender के ऊपर एक condition है कि आपका जो loan है, you will be terming it as NPA या फिर you will continue the loan to be termed as standard asset. So there are few conditions. If after the credit event, resolution plan is activated by the lender, and during the resolution plan, if certain conditions are fulfilled, then the loan will remain in the category of standard asset. Otherwise, the loan will be transferred or it will be converted as NPA. तो कंस्ट्रक्शन बाद में देखेंगे, पहले जो पैसा अभी तक लोन पे दे दिया उसको रिकवर कैसे करना है, that will be the major challenge for the lender. समझ आई यहां तक बात? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? तो अब आज हो गया क्रेडिट इवेंट. The moment credit event has occurred, now for the next 30 days, the lenders, the group of lenders, they will review कि what is the credit event, what was the intensity of this credit event, what is the probability or what are the chances that the loan will be turning into NP in the near future, what is the current scenario of the company. We call it as what it is known as review phase. We call it as review phase. After review phase, all the lenders, जितने भी banks हैं जिन्होंने मिलकर लोन दिया, they will come together and they will initiate the process of resolution plan. अब resolution plan में क्या क्या चीजें होंगी? सर resolution plan में 3 चीजें हो सकती हैं. पहला जो पॉइंट है resolution plan का वो है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है it won't be
completed in the given timeline. So there will be extension of TCCO. ये जो date है, it will be extended, but there is a limit. What is the limit? अगर ये extension है up to 3 years in case of infrastructure projects, और अगर ये extension है up to 2 years in case of non-infrastructure project, then in this case, loan after this resolution plan will fall in the category of standard asset only. इसको हम क्या कहेंगे कि सर कोई बात नहीं, ये standard asset ही है, अगर इतना extension हो रहा है, it is acceptable. अगर इतना extension हो रहा है, it is acceptable. अब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि सर अगर इतना extension होगा तो उस केस में क्या होगा सर? अगर इतना एक्सटेंशन हो रहा है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू नीड कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ओवररन होगी, कॉस्ट इंक्रीज होगी, और ये जो कॉस्ट ओवररन है वो कितना हो सकता है सर? अप टू 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट. ये कितना हो सकता है सर? दैट विल बी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10%. और ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% है ये कहां से आएगा सर? दैट विल कम फ्रॉम स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी. दैट विल कम फ्रॉम स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी. तो यहां पर आपका लोन क्या हो जाएगा? कॉस्ट ओवररन के बाद स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी से 10% एक्स्ट्रा फंड्स जो हैं वो रिकवर, वो यूज किए जाएंगे. एंड आफ्टर द यूज ऑफ दोज फंड्स, then the project will continue to be in the category of standard asset. Project को आज भी हम will maintain to be termed as what? So we will call it in the same category, that is standard asset. यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहां तक? Any doubt till this point? Cost overrun क्या होता है? Why this point of cost overrun has come in the picture? So the point of cost overrun has come in the picture because अगर आपने extend किया है, you have extended the timelines, you have extended the date of delivery of the project. Obviously तो cost भी बढ़ेगा, अगर वो cost up to 10% बढ़ रहा है, और उसके बाद debt to equity ratio इस प्रोजेक्ट की appropriate है, then in that particular case loan will be termed to be maintained in the category of standard asset only. अगर ये conditions fulfill नहीं हुई, मान लो cost overrun 10% से ज्यादा, मान लो extension 3 साल या 2 साल से ज्यादा, तो उस केस में this loan will be declared as NPA, this project will be declared as NPA. समझ आई ये बात? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है in this discussion is that is termed as what? So that is termed as change in scope. And size. आपने क्या कहा कि सर अगर प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन हो रहा है तो एक्सटेंशन विल बी द पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, बट हो सकता है कि ये जो एक्सटेंशन है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन स्कोप एंड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. अब भैया मैंने सोचा था कि ब्रिज बनाऊंगा 5 किलोमीटर का, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार, अब बना ही रहे हो तो 2 किलोमीटर और एक्सटेंड कर लो, नीचे वाले 2-3 जो इश्यूज हैं वो और ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे. तो ये क्या हुआ? स्कोप जो प्रोजेक्ट का है, जो साइज है प्रोजेक्ट का, वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. और जब भी कभी आपका प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज होता है, स्कोप इंक्रीज होता है, तो उस केस में वी कीप द प्रोजेक्ट एज स्टैंडर्ड एसेट. वी विल कीप द प्रोजेक्ट इन द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड एसेट. ये प्रॉब्लम कैसे आई? प्रॉब्लम ऐसे आई कि क्रेडिट इवेंट हुआ. क्रेडिट इवेंट में कंपनी ने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा, सर आई वोंट बी एबल टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन द गिवन डेट. जैसे उसने ये डिक्लेयर किया कि आई वांट एक्सटेंशन, यानी कि क्रेडिट इवेंट हो गया. अब क्रेडिट इवेंट हुआ तो बैंक्स ने या लेंडर्स ने मिलकर रेजोल्यूशन प्लान को इनिशिएट किया, और जब रेजोल्यूशन प्लान को इनिशिएट किया गया तब प्रोजेक्ट ओनर, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि सर देयर इज अ एडिशन इन द प्रोजेक्ट, स्कोप एंड साइज प्रोजेक्ट का इंक्रीज हुआ है, एंड आई वांट दैट माय लोन शुड रिमेन इन द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड एसेट ओनली, irrespective of the point that my loan has already witnessed a credit event. तो RBI ने कहा ठीक है, we will maintain your project as what? We will maintain your project as standard asset if you fulfill certain conditions in case of scope and size. In case of scope and size revision, what are those conditions? The first condition is, in case of scope and size, more investment in the project should be greater than 25% of project cost. अगर project cost
से 25% का एडिशन होगा, अगर 25% का एडिशन होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 25% या उससे ज्यादा बढ़ेगी, 25% या उससे ज्यादा बढ़ेगी, तभी वी विल एक्सेप्ट द स्कोप एंड साइज। अदरवाइज अगर 25% से कम बढ़ रहा है तो भैया कॉस्ट ओवररन में ही अपने आप को मैनेज कर लो। अगर कॉस्ट ओवररन में मैनेज नहीं हो रहा देन विल कॉल इट एज एनपीए, क्योंकि स्कोप एंड साइज का मतलब है कम से कम जो कॉस्ट है वो 25% तो बढ़नी ही चाहिए, कम से कम जो कॉस्ट है वो 25% तो बढ़नी ही चाहिए। उसके साथ साथ जो आपका लेंडर है वो रीअसेस करेगा कि क्या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वायलेबल है या नहीं, और इस प्रोजेक्ट की री रेटिंग की जाएगी। तो एक तो इसका वायलेबिलिटी चेक की जाएगी दोबारा, क्या ये प्रोजेक्ट वायलेबल है या नहीं, और उसके साथ साथ इसकी री रेटिंग की जाएगी। अगर री रेटिंग करते समय आपकी जो रेटिंग है वो एक नॉच कम होती है देन इट इज एक्सेप्टेबल। व्हाट डज दिस मीन? एक नॉच कम होती है कि अगर मैं कहूं जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया उसकी रेटिंग ए थी, अब ए से कम होकर ए माइनस हुई, एक्सेप्टेबल है। ए प्लस थी, ए प्लस से कम होकर ए हुई, एक्सेप्टेबल है। लेकिन ए प्लस से अगर ए माइनस हो गई, 2 नॉच गिर गई, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल का मतलब इट वोंट बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड एसेट, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट सर? इट विल बी टर्म्ड एज एनपीए, इट विल बी टर्म्ड एज एनपीए। समझ आ गई बात? समझ आ गई। लेकिन एक चीज आप याद रखना, ये जो स्टैंडर्ड असेट क्लासिफिकेशन का बेनिफिट है ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन स्कोप, इट इज अलाउड ओनली वंस। ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है सर, आप जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप बार बार बदलोगे, उसका साइज बार बार बदलोगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा? सो दिस इज अलाउड ओनली वंस इफ दीज 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, योर लोन विल रिमेन इन स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी। बट इफ द क्रेडिट इवेंट हैज अकर्ड with the demand of extension of the DCCO, but that demand is in order to increase the size and scope, then in case of size and scope, these conditions are need to be fulfilled. And if these conditions are fulfilled, then the loan will remain in the category of standard asset. Otherwise, if these conditions are not fulfilled, then the loan will be declared as what? So loan will be declared as NPA. Your loan will be declared as what, sir? It will be declared as NPA. यहाँ पे एक और चीज है, the conditions shall be required to be met before the expiry of 180 days from the end of review period. मतलब कि ये जो conditions हैं जो हमने यहाँ mention की हैं, these conditions are need to be met. These conditions are need to be met within 180 days. अगर 180 दिन के अंदर ये conditions meet हो गई, your loan will remain in the category of standard asset. Otherwise भले ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हो बट टाइम अगर ज्यादा लग गया, 180 दिन से ज्यादा लग गया, देन अगेन दिस लोन विल बी डिक्लेयर्ड एज एनपीए। देन अगेन दिस लोन विल बी डिक्लेयर्ड एज एनपीए। समझ आ गई है पूरी कहानी? इज दिस स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन? इफ दिस स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन, जस्ट गिव मी यस सर। इफ दिस स्टोरी इज क्लियर टू एवरीवन, जस्ट गिव मी यस सर। बेटा ये जो क्लासेस है ना, ये क्लासेस हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। फिर चाहे वो बैंक एग्जाम्स हो, आरबीआई हो, सेबी हो, आईएफआरडीए हो, पीएफआरडीए हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, यहां पे जो भी हम सीख रहे हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। इवन दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन आईएफएससी एग्जाम विच इज गोइंग टू अकर इन नियर फ्यूचर, पीएफआरडी एग्जाम जो बहुत जल्द होने वाला, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बैंकिंग एग्जाम, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, उन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप जैब कैब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है सर? अगला पॉइंट कहता है कि अगर आपका लोन स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में है, देन वी ऑल नो दैट यू हैव टू मेंटेन सर्टेन रिजर्व्स। वी ऑल नो दैट यू हैव टू मेंटेन सर्टेन रिजर्व्स, वी कॉल इट एज प्रोविजनिंग। याद है मैंने आपको क्रेडिट प्रोविजनिंग पढ़ाया था इन केस ऑफ जनरल लोन। इन केस ऑफ जनरल लोन वी टॉक्ड अबाउट क्रेडिट प्रोविजनिंग, और उस क्रेडिट प्रोविजनिंग में मैंने आपको बताया था दैट क्रेडिट प्रोविजनिंग will be defined as per the asset characteristics. If the asset, that means bank's loan, is in the category of standard asset, that means risk is pretty low, then in that case provisioning will be low. As asset character changes, it moves from standard to substandard, substandard to doubtful, doubtful to loss asset. The moment the asset category changes, that means the risk associated with the asset increases, the provisioning will also increase. Now with respect to
project finance, there is a condition of, or there are certain criterias of provisioning. And if I talk about these provisionings, how we define these provisionings, so these provisionings are defined as per the loan. First category we have is commercial real estate project, then we have commercial real estate residential housing projects, and then we have the infrastructure projects, or we call it as other projects, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और वी कॉल इट एज अदर प्रोजेक्ट. ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशंस हैं. क्या दो कंडीशंस हैं सर? पहली कंडीशन है कि अगर आपका प्रोजेक्ट अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, इफ योर प्रोजेक्ट इज इन कंस्ट्रक्शन फेज, इफ योर प्रोजेक्ट इज इन कंस्ट्रक्शन फेज, तब जो आपकी प्रोविजनिंग है दैट विल बी डिफरेंट. एंड इफ द प्रोजेक्ट इज इन ऑपरेशनल फेज, देन इन दैट पर्टिकुलर केस योर प्रोविजनिंग विल बी डिफरेंट. आई होप इट्स वेरी क्लियर, है ना. अब ये प्रोविजनिंग कितनी होगी, आई जस्ट लेट यू नो. इफ आई टॉक अबाउट द प्रोविजनिंग वैल्यू or the provisioning percentage, sir, it is 1.25% for commercial real estate projects. It is 1% for commercial real estate residential housing project, and it is 1% for the infrastructure projects, or we can call it as other projects, or we call it as other project. ठीक है, अब जैसे ही आपका ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में, सॉरी, ऑपरेशनल फेज में जाएगा, in case of operational phase, now bank has started receiving the return. The moment bank has started receiving the return, that means risk has decreased. If risk has decreased, we will decrease the provisioning. If now you are decreasing the provisioning, this falls down to 1%. This falls down to 1%. This falls down to 0.75%, and it falls down to 0.40%. It falls down to 0.40%. ठीक है जी. अब यहां पे एक नया कंडीशन एड ऑन करते हैं. वो नई कंडीशन क्या है? द न्यू कंडीशन इज इफ डीसीसीओ इज एक्सटेंडेड. याद है मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी जो डीसीसीओ है वो एक्सटेंड हो सकती है. आपकी जो डीसीसीओ है वो एक्सटेंड हो सकती है. और वो कितनी एक्सटेंड हो सकती है सर? अगर आप डीसीसीओ जो कि एक्सेप्टेड है इन द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, क्योंकि ये सारी प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड एसेट के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था, in case of infrastructure project, it is accepted up to 3 years, and in case of commercial project, in case of commercial real estate project, including the residential housing projects, kitna extension allowed hai so that the loan remains in the category of standard asset only? So that is 2 years. Yaad hai? Do you remember this? Say yes or no. Do you remember this? Say yes or no. ठीक है. अब होगा क्या? अब होगा ये कि सर अगर आपका जो लोन है उस लोन का डीसीसीओ एक्सटेंड किया गया, तो अगर लोन का डीसीसीओ एक्सटेंड किया, स्टिल लोन रिमेन्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड एसेट. क्योंकि अगर इतना एक्सटेंशन होगा तो उस केस में लोन तो स्टैंडर्ड एसेट में रहेगा. लेकिन अगर डीसीसीओ एक्सटेंड हुआ है तो देयर इज अ पॉइंट दैट द रिस्क रिलेटेड टू द लोन हैज इंक्रीज्ड. देयर इज अ पॉइंट that risk related to the loan has increased. It's quite obvious that loan is still in the category of standard asset, but the risk associated with this standard asset has increased. The moment risk associated with this standard asset has increased, then there will be an addition. Provisioning which is need to be done. And what will be this additional provisioning? So this additional provisioning is going to be 0.575%, 0.5625%, 0.625% per quarter, 0.625% per quarter for commercial real estate and commercial real estate housing projects. And in case of infrastructure projects, it is going to be what value? Sir, there will be an addition provisioning which is required, and that will be 0.375%. 375% per quarter. Addition, or I would say additional provisioning. ठीक है जी. अब यहां पर अब यहां पे ध्यान से सुनना. मानो अगर जो एक्सटेंशन है, the extension which has been done, please pay attention. If the extension over here is maximum extension कितनी हो सकती है सर? 2 years.
मैक्सिमम एक्सटेंशन यहां पे भी कितनी हो सकती है सर? 3 years. If I go with the maximum values, then in that particular case, what will happen? Sir, in that particular case, with respect to this construction phase, there will be an addition. With respect to this construction phase, there will be an addition. और वो addition कितना होगा? सर एक क्वार्टर है 0.5625, एक जो क्वार्टर है दैट इज 0.5625, मैंने तो कैलकुलेटर उठा लिया. अब ये जो 0.625 है, 0.5625 है, दिस इज फॉर 1 क्वार्टर. एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4. 2 साल में कितने क्वार्टर होंगे? 8. अब अगर 2 साल में 8 क्वार्टर होंगे, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 8, दैट मींस व्हाट विल बी एन एडिशनल, provisioning which is need to be done. So 4.5% additional will be done. अगर कंस्ट्रक्शन फेज में एक्सटेंशन हुआ तभी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि जब ऑपरेशनल फेज में आ गया तब तो डीसीसीओ एक्सटेंड होगा ही नहीं. डीसीसीओ के बाद ही तो ऑपरेशनल फेज आया. तो यहां पर अगर कंस्ट्रक्शन फेज से एक्सटेंशन हो गया तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में फॉर सीआरई it will increase by 4.5 and for CRE-RH it will also increase by 4.5%. यहां पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम स्कोप कितना है? If you see over here, what is the maximum scope? So 0.375% is extra provisioning for 1 quarter. In 3 years we have 12 quarters. Then again there will be an addition of 4.5%. So समझ लो प्रॉब्लम जो थी वो आरबीआई ने रिजॉल्व कर दिया. पहले आरबीआई क्या कह रहा था? आरबीआई कहता था कि जब आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जाएंगे तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के केस में इवन इफ योर लोन is in the standard asset category, you have to maintain a provisioning of around 5% in the standard asset category. और banks they were very upset with this कि अगर हम standard asset के लिए भी provisioning 5% रखेंगे तो सर ये बताओ प्रॉफिट कहां से कमाएंगे? तो बैंक कहता, आरबीआई कहता टेंशन मत लो, I'll change it. तो आरबीआई ने क्या कहा? If your project is in standard asset, in construction phase or in operational phase, these are the pretty limited, pretty low provisionings which you need to keep. But if your project DCCO is extended, if your project's DCCO is extended and it is extended within the limit because of which the loan remains in the category of standard asset, because which the loan still remain in the category of standard asset, तो लोन आज भी standard asset ही है, but the extension of DCCO will result in addition of reserves or addition of, I would say, credit provisioning, and this addition is going to be 0.5625% for 1 quarter. अगर आपका extension is for 1 year, you will multiply it with 4. Extension is for 1.5 years, then you will multiply with 6. If it is extension is for let's say 2 years, then it will be multiplied by 8. Same goes over here, but the maximum limit over here is 3 years and the maximum limit is 2 years. 2 years and 3 years maximum limit with respect to what? Sir, to maintain the loan in the category of standard asset. अगर ये लिमिट क्रॉस कर दी, स्टैंडर्ड एसेट ही नहीं रहेगा, तो ये जो प्रोविजनिंग्स हम पढ़ रहे हैं इनकी बातें ही नहीं रहेंगी. समझ आ गया जी? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो पूछ लो, अदरवाइज मेरी तरफ से कहानी कंक्लूड है. मैं आपको सारी कहानी दिखा देता हूं. ये इमेज फॉर्म में 3 इमेजेस में पूरे का पूरा आपका जो सर्कुलर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया. अब आप ध्यान से देख लो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं. ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. फिर हमने पढ़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस होता क्या है. देन वी स्टडीड द 3 phases ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस. उन 3 phases को काफी डिटेल में हमने पढ़ा. उसके बाद वी मूव्ड अहेड, देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज डीसीसीओ, ओरिजिनल क्या है, एक्सटेंडेड डीसीसीओ क्या है, एक्चुअल डीसीसीओ क्या है. देन वी टॉक्ड अबाउट डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोजर क्या है. देन वी डिस्कस इन डिटेल द प्रोजेक्ट फ्लो, जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा, फाइनेंशियल क्लोजर होगा. देन वी टॉक्ड अबाउट कंस्ट्रक्शन फेज, देन वी टॉक्ड अबाउट डीसीसी, और उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन होगा, उसके बाद लोन रीपेमेंट होगी. देन वी मूव्ड अहेड, देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज क्रेडिट इवेंट. Then we moved ahead, then we talked about resolution plan. फिर हमने finally अपने इस particular master direction को, इस circular को start किया. और जैसे ही हमने इसको start किया, we talked about its applicability. It is applicable on all the banks, excluding payment banks, local area banks as well as RRBs. ये याद रखना. उसके अलावा अगर हम बात करें तो lenders से related क्या क्या conditions हैं कि before providing the loan, before giving the loan disbursement,
these conditions are need to be fulfilled, then only lending will be done. Then there is a condition related to the lender exposure कि lender का exposure per lender exposure कितना हो सकता है. सब per lender exposure 10% होगा मिनिमम अगर लोन की वैल्यू या टोटल एक्सपोजर है 1500 करोड़ का, और अगर टोटल एक्सपोजर 1500 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट पर्टिकुलर केस पर लेंडर एक्सपोजर विल बी 5% और 150 करोड़ विच एवर इज हायर. ठीक है जी. उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट कि लैंड राइट्स के लिए वी टॉक्ड अबाउट अपॉइंटेड डेट. देन वी टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टेक्नो इकोनॉमिक वायलेबिलिटी गवर्नमेंट चेक करेगी इफ द टोटल एग्रीगेट लोन इज मोर देन 100 करोड़ रुपीस. स्टेज वाइज डिस्पर्समेंट होगा, जहां पे हमने ये बात की थी कि जो डिस्पर्समेंट है वो 3 कैटेगरी से लिंक होगा. एक है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन स्टेज, दूसरा इक्विटी इन्फ्यूजन, और तीसरा था अदर कमिटेड फंडिंग सोर्सेस. फिर उसके बाद हमने बात की ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करनी होगी, और अगर क्रेडिट इवेंट हुआ तो क्रेडिट इवेंट क्यों हो सकता है, ध्यान से देखो. या तो डिफॉल्ट हो जाए लोन, या फिर डीसीसीओ एक्सटेंशन का नीड हो, तो इन सारे केसेस में वी कॉल इट एज व्हाट सर, वी कॉल इट एज क्रेडिट इवेंट. और जब क्रेडिट इवेंट होगा तो रेजोल्यूशन प्लान को इंट्रोड्यूस करना होगा, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान से भी पहले यू हैव टू इन्फॉर्म और यू हैव टू अपडेट द क्रेडिट इवेंट अंडर CRILC, ताकि और सारे लेंडर्स को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि लिंक्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. फिर उसके बाद आप रिव्यू करेंगे, और रिव्यू पीरियड होगा 30 डेज का. आफ्टर 30 डेज ऑफ रिव्यू पीरियड देन वी विल कम अप विद द डिसीजन कि क्या हम अपने लोन को एनपीए का टैग देंगे या नहीं. तो पहली कंडीशन है कि अगर आपका लोन एक्सटेंड होता है अप टू 3 इयर्स, या आपका प्रोजेक्ट एक्सटेंड होता है अप टू 3 इयर्स या अप टू 2 इयर्स, वी वोंट डिक्लेयर इट एज एनपीए, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड एसेट ओनली, कीपिंग इन माइंड द सेकंड कंडीशन. द सेकंड कंडीशन इज जो कॉस्ट ओवररन है वो होगा अप टू 10%, और वो पैसा कहां से आएगा, सो दैट विल कम आउट फ्रॉम द स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी. अगर स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है तो उस केस में एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन दिस ओवररन कॉस्ट विच इज अप टू 10%. फिर प्रोजेक्ट का डेट टू इक्विटी रेशियो एग्जामिन किया जाएगा, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग देखी जाएंगी. इफ एवरीथिंग इज strong, if everything is in favor, then the loan will remain in the category of standard asset only. अब मान लो कि यहां पे जो ये एक्सटेंशन हुआ था, डीसीसीओ एक्सटेंशन हुआ था, that is because of scope और change in scope and size. तो अगर change in scope and size है तो आपका लोन जो है that will remain in the category of standard asset even after the credit event, even after the demand for extension of DCCO, if project कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ओवररन एटलीस्ट बाय 25%. लेंडर्स वो रीअसेस करेंगे प्रोजेक्ट के वायलेबिलिटी को, री रेट होगा प्रोजेक्ट, इट शुड नॉट फॉल बिलो 1 नॉच और इट शुड नॉट फॉल बाय मोर देन 1 नॉच. और स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफिकेशन बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन स्कोप कैन बी डन ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. तो अगर आपका लोन, आपका प्रोजेक्ट में क्रेडिट इवेंट हुआ जहां पे डिमांड हुई, वी हैव टू चेंज द डेट, वी हैव टू एक्सटेंड द डीसीसीओ, तो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एक्सटेंशन. दे से द नीड ऑफ दिस एक्सटेंशन इज चेंज इन स्कोप एंड साइज, और अगर चेंज इन स्कोप एंड साइज में ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, लोन विल बी डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड एसेट. अदरवाइज अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, स्टिल देयर इज अ चेंज इन साइज एंड स्कोप, देन इट विल बी टर्म्ड एज एनपीए. देन द लास्ट पॉइंट वी हैव इज कि यू हैव टू कंप्लीट this entire resolution process within 180 days, which we have already discussed. अब criteria क्या रखा गया provisioning का? This is the criteria of provisioning in case of construction phase, in case of operational phase. Then I have already discussed with you, if there is an extension for infrastructure project as well as non-infrastructure projects, there should be extra provisioning done once the DCCO is extended, and this extra provisioning is calculated पर क्वार्टर डिपेंडिंग अपॉन दी डीसीसीओ एक्सटेंशन. और ये सारी बातें जो आपके सामने है, ये सारी की सारी चीजें मैंने 3 स्लाइड्स में आपको यहां प्रेजेंट करके दी हैं. आई होप अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको तीनों की तीनों स्लाइड्स में पूरे का पूरा जो निचोड़ है इस पूरी की पूरी मास्टर सर्कुलर का वो दिख रहा हो. ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इफ एवरीथिंग इज फाइन जस्ट गिव मी यस सर. इफ एवरीथिंग इज फाइन जस्ट गिव मी yes sir, so that I can move ahead. If it is clear to everyone, give me yes sir quickly so that I can move on to the next news.
The next news is again very important. Let's try to decode the next news as well. This is again related to RBI, I guess. Yes, the next news is RBI has recently presented the data. RBI has recently presented the data on external debt. Whenever we talk about external debt basically means the amount borrowed by the entire nation. The moment I say entire nation, in this I include the government as well as I include the private players, I include the government agencies, everybody, whatsoever borrowing is done from rest of the world will fall in the category of external debt. And this external debt is borrowed. This external debt is borrowed in US dollars. It is also borrowed in INR. Now you must be wondering, external debt INR में कैसे? Sir, external debt INR में हो सकती है. For example, रशिया के साथ आपने INR ट्रेड सेटलमेंट किया. रशिया is having huge reserves of INR, तो उनके लिए INR किसी काम का नहीं है. So they have given you INR in the form of loan. तो आपको INR मतलब इंडियन रुपीस के फॉर्म में लोन मिल गया. You have got the loan as a government what you were looking forward for, or as a company what you were looking forward for. Secondly, there is no exchange rate risk क्योंकि आपको जो लोन मिला वो रुपीस में मिला, आपको वापस भी रुपीस में करना है. उसके अलावा you borrow in yen and you borrow in different currencies. उसके अलावा अगर हम बात करें जो borrowing है वो सबसे ज्यादा या जो borrowing की जाती है that is done by the government. Borrowing is done by the non-government organizations, or we can call it as private organizations. These are the borrowers. So there are few conditions which we need to remember. So let's get started with this discussion. जो जो चीजें आपने याद रखनी है मैंने सिर्फ वही यहाँ पर include की हैं. I have highlighted those datas which you need to remember, and from a very big circular I have just taken up, or from a very big piece of information I have taken up only those informations which are relevant for your examination point of view, जहां पे आपके पास descriptive question में use की जा सकती है, या फिर you can use this data in your objective questions as well if required. तो सबसे पहली चीज, the stock of external debt as of March 2025 has been disclosed by RBI in the recent bulletin. So at the end of March 2025, India's external debt, तो अगर हमसे कोई पूछे कि आज इंडिया के ऊपर टोटल एक्सटर्नल डेट कितना है, तो आज इंडिया के ऊपर जो टोटल एक्सटर्नल डेट है दैट इज $736 बिलियन, जो कि इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू मार्च 2024. और मार्च 2024 में अगर हम बात करें तो इससे $67 बिलियन कम था. मोटी मोटी अगर मैं बात करूं $670 बिलियन के आसपास था मार्च 2024 में, लेकिन अब वो बढ़कर कितना हो गया सर? इट हैज इंक्रीज टू $736 बिलियन. इसका मतलब इस साल में जो एडिशन हुआ है एक्सटर्नल डेट का ऑन इंडिया, दैट इज व्हाट वैल्यू? सो द वैल्यू ऑफ दैट एक्सटर्नल और द वैल्यू ऑफ एडिशनल डेट ऑन इंडिया इज $67.5 बिलियन. सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्सटर्नल जीडीपी, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, अगर आप $736 बिलियन को डिवाइड करते हैं विद द इंडियन जीडीपी, लेट्स से इट्स $4.5 ट्रिलियन, तो जब आप उसे डिवाइड करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 19.1%. इट हैज इंक्रीज टू 19.1% व्हिच वाज अर्लियर 18.5%. तो पहले जो एक्सटर्नल डेट जीडीपी रेशियो था दैट वाज 18.5%. नाउ इट हैज इंक्रीज टू 19.1%. अगेन दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यूएशन इफेक्ट. इस पॉइंट को मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना. एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल को एग्जांपल की तरह सुनिएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. Let's say there is a company, I call this company COIND. तो इंडिया की कंपनी है. This company has borrowed $100 as loan from a foreign entity. किसी foreign entity से $100 लोन लिया, and this loan is borrowed for 2 years. और जिस दिन ये borrowing की गई, the day when this borrowing was done, during the day of borrowing, $1 was equals to 100 rupees. $1 was equals to 100 rupees. तो टेक्निकली ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने
कितना पैसा बोरो किया सर, इस कंपनी ने $100 बोरो किए, या फिर आप इंडियन रुपीज में कितना बोल सकते हैं सर, इंडियन रुपीज में यू कैन से दिस कंपनी हैज बोरोड 10,000 रुपीज। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ कि ये जो बोरोइंग थी ये इस साल में की गई, द बोरिंग हैज बीन डन इन दिस फाइनेंशियल ईयर, और इस एक साल के अंदर जिसका आरबीआई डेटा शेयर कर रहा है, इन दैट वन फाइनेंशियल ईयर there has been revision in the exchange rate. So what is the revision in the exchange rate? So the $1 which was earlier equals to 100 rupees, now its value has increased to 110. Now its value has increased to 110 rupees. अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और इंक्रीज होकर कितनी हो गई 110 rupees, तो ये जो आपका लोन था which was $100, the loan which was $100, now this loan will increase to what value? So this loan will increase to 11,000 rupees. This loan will increase to 11,000. क्यों? लोन वैल्यू क्यों बढ़ गई सर? बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट। अब अगर मैं कहूं कि 11,000 के लोन को मैं रिप्रेजेंट करूं फ्रॉम द डे ऑफ बोरोइंग, तो डे ऑफ बोरोइंग में ये जो आपका बोरोइंग $100 का था वो एक्चुअली में बढ़कर कितना हो गया $110। अब ये जो $10 का एडिशन हुआ आपके लोन में, ये जो $10 का एडिशन हुआ आपके लोन में, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट सर? दैट इज बिकॉज ऑफ फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या? यूएस डॉलर एप्रिशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपीज, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपीज। अब आपका जो बोरोअर है, द बोरोअर विल बी पेइंग बैक इन डॉलर्स अनडाउटेडली, लेकिन जब आप पे करोगे डॉलर्स में, यू विल बी एक्सचेंजिंग रुपीज इनटू डॉलर, यू विल बी एक्सचेंजिंग रुपीज इनटू डॉलर। तो आपने 11,000 रुपए जो आपने रिटर्न करने हैं, दैट इज गोइंग टू बी $100 ओनली एज पर द एक्सचेंज रेट, बट इन कंपैरिजन टू द initial phase, your loan has increased to $110, और ये जो $10 increase हुआ है, that is not a practical increase, that is an increase due to the US dollar appreciation. तो अगर आप इसे exclude करते हैं, अगर आप इस appreciation को exclude करते हैं, if you exclude this appreciation, then, or if you exclude the valuation effect, then borrowing, or I would say then the external debt would have increased. Then the external debt जो आपने यहां पे लिखा कि external debt पिछले साल के हिसाब से कितना इंक्रीज हुआ? $67.5 billion. बट अगर आप इस एक्सटेंशन में while calculating this particular increase, while discussing this particular increase, if you include the valuation value also, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर एक्चुअली में जो आपका लोन इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ? $72.9 बिलियन, क्योंकि ये तो आपने एक्चुअली पैसा बोरो किया, और ये $5 बिलियन जो आपकी यूएस डॉलर्स एप्रिशिएट हो गए विद रिस्पेक्ट टू रुपीज, उसकी वजह से जो आपकी टोटल बोरोइंग इंक्रीज हुई है, दैट इज मोर देन $67.5 बिलियन। एब्सोल्युटली करेक्ट। यू कैन कॉल इट एज फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क। इन स्पेसिफिक यू विल बी talking about this as translation risk, not transaction risk. That is absolutely correct. Moving on to the next point. The next point is at the end of March 2025, long term debt. तो आपका जो external debt है, उस external debt में कुछ long term debt है, एक साल से ज्यादा वाला, कुछ short term debt है, एक साल से कम वाला। अब अगर हम बात करें long term debt की, तो सर long term debt है $601.9 बिलियन, $601.9 बिलियन, और आपका जो टोटल बोरोइंग्स थी वो कितनी थी सर? टोटल बोरोइंग वाज 736। अब 736 और 601 अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 135। तो $135 बिलियन इज व्हाट? दिस इज योर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है दैट इज 70% ऑफ द टोटल बोरोइंग, और जो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, सॉरी 72.1% या 72.3%, कुछ ऐसा ही था, 71.7%, 71.7%. So it is 71.7% of the total borrowing, and rest of the borrowing is 18.3% is the borrowing in the form of short. तो ये आपको फिगर्स हैं जो याद रखनी है, दे आर इंपॉर्टेंट. अगला जो पॉइंट है, इसकी फिगर्स याद मत रखना, डू नॉट रिमेंबर द फिगर्स, बट
फ्लो याद रखना, व्हाट इज द फ्लो। सर सबसे ज्यादा जो इंडिया ने बोरो किया है, सो द हाईएस्ट बोरोइंग डन बाय इंडिया इज डन इन विच डिनोमिनेशन? सो द हाईएस्ट बोरोइंग डन बाय इंडिया इज डन इन, the highest borrowing is done by India in which form? So it is done in the currency that is US dollars. So highest borrowing is done in US dollars. Second highest we have Indian rupees and on the third rank we have yen. तो इस फॉर्म में, इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया गया? बोरोइंग्स की गई है एज पर दी करेंसी। इफ आई टॉक अबाउट द शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग, इन द शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा जो लोन है वो किस पे है? नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस पे है। अगेन डोंट रिमेंबर द डेटा परसेंटेज वाला, बट ये फ्लो याद रखना। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बाद सेकंड रैंक पे जो लोन है या फिर आप कहें कि जो लाइबिलिटीज हैं, दैट इज ऑन द डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशंस। दैट मींस डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशंस। तो डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशंस का मतलब बैंक्स हो गए। बैंक्स के बाद अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज हो गई। फिर उसके बाद आया हमारा जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट के बाद आए अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो अगर आपको ये फ्लो याद है फॉर दिस एज वेल एज दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फ्लो से ज्यादा कुछ और एग्जामिनर नहीं पूछेगा। लास्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज, अगर हम बात करें कि ये जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स है इसमें सबसे ज्यादा पैसा लोन के फॉर्म में आया, लोन के बाद पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में आया। तो जो डिपॉजिट के फॉर्म में आपके पास आया एंड ऑफ द डे है तो वो आपकी लाइबिलिटी। इफ यू आर अ बैंक ऑन वन साइड यू आर बोरोइंग, समझ लो इस पॉइंट को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डिपॉजिट कैसे आ गया। लेट्स से देयर इज एन इंडिविजुअल ए, ही स्टेज इन अमेरिका। दिस इंडिविजुअल ए हैज डिपॉजिटेड $10 in SBI and this individual A has given a loan of $20 to an individual in India. तो ये जो लोन दिया इंडिविजुअल को या फिर ये जो पैसा डिपॉजिट किया बोथ द फंड्स आर लाइबिलिटी ऑन इंडिया, बोथ द फंड्स आर लाइबिलिटी ऑन इंडिया। सो सबसे ज्यादा जो एक्सटर्नल डेट है, सबसे ज्यादा जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन। सेकेंड रैंक पे वी हैव डेट एंड ऑन द थर्ड रैंक, second rank पे we have deposit and on the third rank we have trade credits or advances, so on. Last but not the least is your debt service. अगर हम debt service की बात करें कि हर साल जो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना है, हर साल जो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करना है, वो जो है दैट इज 6.6% ऑफ योर करंट रिसीट्स, 6.6% ऑफ द करंट रिसीट्स। तो गवर्नमेंट का जो करंट रिसीट है उसका 6.6% गवर्नमेंट मेक दी रीपेमेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल डेट। अब वो एक रीपेमेंट में हो सकता है इंटरेस्ट पेमेंट हो या फिर रीपेमेंट हो लोन का, या फिर आई वुड से रिटर्न हो लोन का, क्योंकि अगर मान लो कोई लोन आपने लिया था दैट इज गोइंग टू मैच्योर इन दिस ईयर, तो उसका जो रिटर्न है एडिंग द इंटरेस्ट, इट कम्स आउट टू बी व्हाट वैल्यू? सर इट कम्स आउट टू बी 6.6% ऑफ what? Sir, it comes out to be 6.6% of current receipts. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक ये सारा डेटा जो आपको याद रखना, आई गेस देयर इज नो डाउट। सिर्फ और सिर्फ यू नीड टू डू द होमवर्क टू रिमेंबर दीज डेटास। आई हैव हाईलाइटेड ईच एंड एवरी पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर। जितना हाईलाइट किया बस वही याद रखना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पे मैंने जो हाईलाइट किया है दैट इज ओनली द डिनोमिनेशन। आई हैव नॉट हाईलाइटेड दिस परसेंटेज। अगर मैंने परसेंटेज हाईलाइट नहीं किया तो डोंट रिमेंबर इट। सिमिलरली ओवर हियर just remember the values, not the just remember the names, not the percentages. Same goes for here as well. ठीक है, done, got it. Shall we move ahead? Give me yes sir in the comment section so that I can move ahead. And if you haven't liked this session yet, hit the like button. If you haven't shared the link of this session yet, do share the link of this session with your friends so that more and more students they can join us live. चलो जी, let's move on to the next news. अगली जो हमारी न्यूज है that is RBI has extended call money market timings by 2 hours from 1st of July 2025. I hope you remember what is call money market. So call money market is a place where scheduled banks, they are allowed to borrow and lend funds within banks itself, or I would say call money market is an interbank market where borrowing and lending is done for short term, generally for 24 hours or maybe up to
14 days. In case of 24 hours, the instrument which is used to borrow the loan is known as call money bill. And if you're borrowing for 2 days to 14 days, then we use a word that is, or we use an instrument that is known as notice money bill. This is a borrowing done by one bank from the another bank in order to avoid huge or high rate of interest charged by RBI, in order to avoid repo rate exhaustion in case of RBI, in order to avoid your exhaustion of MSF limits by in terms of directly borrowing from RBI. तो एक तरफ तो आप RBI से you can borrow the funds, you can borrow against repo rate, you can borrow against MSF. In case of MSF, there is a limit 2% of NDTL. In case of repo rate, you need government securities. So if you don't have government securities, you have already exhausted your MSF limit of 2% of NDTL, then what will you do? So you will, as a bank, you will go to call money market to borrow the funds from some other bank against a piece of paper, which is basically a promissory note which says that bank A will make the payment to bank B along with the rate of interest on completion of the time period. If it is 24 hours, it is known as call money bill. If it is more than 24 hours till 14 days, it is known as notice money bill. So this market was earlier allowed to operate, from 9 a.m. to 5 p.m. but now it will be allowed to operate from 9 a.m. to 7 p.m. तो यहाँ पे ये point is very important. 2 hours wala extension is very important. The next point which is important is, so these timings are revised on the recommendation of working group chaired by Radha Shyam Ratho. So Radha Shyam Ratho, the executive director of RBI, under his chairmanship, a working group was set up, and that working group was set up back in February 2025, and they have given this recommendation कि sir, there is a requirement, RBI should extend the कॉल मनी मार्केट टाइमिंग्स बाय 2 आवर्स. आरबीआई ने कहा सिर्फ और सिर्फ कॉल मनी मार्केट की टाइमिंग्स 2 घंटे इंक्रीज की है. बाकी सारी मार्केट्स जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज आर ट्रेडेड, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट्स आर ट्रेडेड, देयर विल बी नो चेंज. देयर विल बी नो चेंज इन दोज मार्केट. सो सिंपल सटीक क्वेश्चन है कि सर कॉल मनी मार्केट टाइमिंग हैज बीन एक्सटेंडेड by 2 hours, and if you talk about the closing time for the market repo and tri-party repo, तो market repo और tri-party repo का जो closing time है वो 2:30 to 3 p.m. से increase करके कितना कर दिया 4 p.m. Earlier इसका जो closing time था that was around 2:30 to 3 p.m. Now it has been fixed कि इसका time क्या होगा 4 p.m. and that will be effective from 1st of August 2025. तो याद रखिएगा, in case of call money market, now the banks, they can borrow the loans, they can lend the loans, not from 9 to 5, rather from 9 to 7, which will give 2 hours extra window for the bank so that they can manage their overnight liquidity in more appropriate manner. Simple. Moving on to the next news. The next news I have is on master circular on agency commission that is given by RBI. बड़ा simple सा point है, इसको बड़े simple way में समझते हैं, discuss करते हैं. सुनिएगा ध्यान से. Please pay attention. So, as we know that government as well as government departments and government organizations, है ना? These government department, government organizations, they are liable to disperse funds to the public. They are liable to disperse funds to the public, and they are liable to collect funds from the public. So they are liable to distribute the funds. Now you must be wondering, is a distribute कब, क्यों, कैसे? Answer सुन लो. Government distribute subsidy to the public. याद आ रहा है? Government distribute subsidy to the public. Government distribute pension to the public. Government distribute certain type of grants or aids to the public. सही है. और दूसरा पॉइंट है public pay taxes, that is GST, to the public on sale and purchase. And there are many other events where public is responsible to pay to the government.
अब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे सपोज टू रिसीव द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, बट ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना that we are going to our CM house or we are going to our PM house or PM house या CM house या PM office या CM office के बाहर there is a window and you are depositing your funds which you are supposed to pay to the government. ऐसा तो कभी नहीं हुआ, never, है ना. If you want to make payment to the government, you want to receive payment from the government, then it is possible only and only with the help of a mediator. Only and only with the help of a mediator, and we all know that. Who is the mediator? So the mediator is RBI. But sir, RBI हर जगह कैसे present होगा यार? एक organization की कितनी जान लोगे? RBI will not be able to perform all the functions, all these demands of the government. RBI is already managing the government accounts. अब government accounts के अलावा अगर ये सब भी RBI manage करे तो पागल हो जाएगा. तो RBI ने कहा सर, it's not possible to perform all kind of functions as per Section 45 of RBI Act 1934. I have the power. RBI says that as per the Section 45 of RBI Act 1934, I have the power that I can appoint banks, public sector banks, as agencies, as agent banks of these government departments or government organizations who will be performing these operations on the behalf of RBI. गवर्नमेंट ने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, आप करो या किसी से करवाओ, we don't care, हमारा काम होना चाहिए. तो RBI appoint banks and those banks are known as agency banks. Those banks are known as agency banks. अब ये जो agency banks हैं, they practically distribute the funds to the public. They practically receive the funds from the public, and from these agency banks, these funds are reach to the government, obviously through RBI, क्योंकि गवर्नमेंट के अकाउंट ही किसमें है, RBI में है. तो RBI में वो पैसा आ गया, तो उसी पैसे की मदद से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज इट्स एक्सपेंसेस. अब पॉइंट ये आया कि सर ये जो बैंक है, एजेंसी बैंक, एजेंट बैंक, ये बैंक इज वर्किंग विद द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. कि भैया SBI बना, चाहे तो मैं कहूं SBI बना, चाहे मैं कहूं ICICI है, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, उसका मेन एम क्या है सर? उसका मेन एम है प्रॉफिट कमाना. तो अगर उसका मेन एम प्रॉफिट कमाना है, इफ दैट बैंक इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज, if that bank is providing certain services, then in that particular case, bank will look forward for certain charges against it, and those charges over here are termed as commission. It is termed as commission. That commission will be paid by government through RBI. Commission will be paid by government through RBI. So commission actually pay कौन करेगा? Government ही pay करेगी. लेकिन किसके थ्रू पे करेगी? RBI के थ्रू. किसे पे करेगी? एजेंसी बैंक्स को, अगेंस्ट द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू द गवर्नमेंट. सो एजेंसी बैंक इज अ बैंक दैट इज ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ entities such as government or government authorities, and even for the other bank is known as agency bank. So government agency banks, they are authorized to handle the government transactions like revenue collection, pension payments, and other financial operations on the behalf of the government. We call it as what, sir? We call it as government agency bank. ठीक है जी. अब अगर कोई बैंक गवर्नमेंट के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, then against this commission will be charged, and recently this commission has been revised. Recently इस commission को increase किया गया due to obvious reasons कि भैया अब अगर महंगाई बढ़ रही है, हर जगह महंगाई बढ़ रही है, तो बैंक के ऑपरेशनल एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं. सो लेट्स इंक्रीज द कमीशन व्हिच विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू RBI. तो आओ जरा इसको चेक करते हैं क्या है ये पूरी न्यूज. इट्स प्रीटी इजी नाउ टू अंडरस्टैंड. सो RBI carries out central and state government banking business through agency banks as per Section 45 of RBI Act 1934. Agency commission is paid by RBI for handling the government business, but this comes from government. Paid by RBI, that is true, लेकिन गवर्नमेंट देगा RBI को, RBI देगा बैंक्स को. कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस की हम बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पेंशन पेमेंट्स for central and state government, any other work specifically advised by RBI is eligible, small saving schemes, Sukanya Samriddhi scheme,
उसके लिए अगर बैंक्स पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पब्लिक in these schemes, eventually that fund is going to the government only. Eventually वो जो पैसा है that is going to reach to the government, but bank act as a agency in between. So that is also a service provided on the that is a service provided to the banks. Even stamp duty collection, चालान, आप ई चालान करते हैं, जैसे आपने कोई फीस भरनी है और आपने ई चालान प्रिंट किया और ई चालान निकाला, उसी चालान को आपने ऑनलाइन फिल कर दिया, ऑनलाइन ही you have made the payment. So that is a transaction through which government is receiving the funds, government organizations are receiving the funds through a bank, and that bank which is receiving the funds on the behalf of the government, which is paying the funds on the behalf of the government, is basically the government agent bank or agency bank, and that agency bank receives commission against their services. And today we will be discussing about those commissions, why these commissions are in news, because they have been increased recently. ठीक है जी. Moving on to the next point. The next point is what was the initial rates. Initial जो commission था, that was from 1st July 2019 onwards. What were that commission rates? Please pay attention. Sir, initial the commission rate was if the bank is receiving the funds in physical mode. That means you are approaching to the bank branch, you are depositing the cash, receiving the receipt against the cash deposit. That will provide agency bank 40 रुपीज कमीशन पर ट्रांजेक्शन. यानी अगर आपने एसबीआई का फॉर्म फिल किया और एसबीआई के फॉर्म को फिल करने के लिए आप एसबीआई छोड़ो, एसबीआई तो बैंक पर्टिकुलर हो गया ना. लेट्स सपोज स्टेट पीसीएस का फॉर्म आउट हुआ, पंजाब स्टेट पीसीएस का फॉर्म आउट हुआ और उसमें कहा गया कि यू कैन मेक द पेमेंट बाय विजिटिंग द बैंक, दैट इज एसबीआई. तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे देयर विल बी अ चालान. You just need to take out the printout of that challan और उस चालान का printout लेके you go to the bank branch, deposit the fees in Punjab. Let's say it's 3,000 rupees fees for Punjab State Civil Service Examination. So in that case you pay 3,000 rupees to the government, but it will be collected by SBI. तो SBI ने 3,000 रुपए पब्लिक से कलेक्ट किए एज अ फीस और वो 3,000 रुपए SBI ने जैसे ही एक्सेप्ट किए उसे एक्सेप्ट करके एक्नॉलेजमेंट दिया किसे, आपकी एजेंसी को जो कि पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कर रही है. जैसे उसके पास ये एक्नॉलेजमेंट पहुंची कि यू हैव रिसीव द फंड्स, तो उस एक्नॉलेजमेंट से यू विल गेट अ मेल और उस मेल में लिखा होगा कि माधव योर फीस हैज बीन पेड, नाउ यू विल बी एलिजिबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड यू विल बी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. लेकिन ये जो 3,000 रुपए आपने दिए, एसबीआई ये 3,000 रुपए पीसीएस इस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करेगा, कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर आप ये कहो कि एसबीआई ने जब ये 3,000 रुपए ट्रांसफर किए तो ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है. उस केस में एसबीआई इन्फॉर्म करेगा किसे, आरबीआई का रीजनल ऑफिस जो कि पंजाब स्टेट को देखता है. अब वो रीजनल ऑफिस है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ आरओ में एसबीआई डिटेल भेजेगा कि आई हैव रिसीव्ड 1,000 चलान्स, I have received 1,000 physical challans against this PCS fee payment और ये 1,000 चालान मैंने रिसीव किए हैं और उसकी सारी पेमेंट आई हैव ऑलरेडी क्रेडिटेड इनटू द रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट. आरबीआई विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट से जैसे यहां पे अप्रूवल आया, अप्रूवल आने के बाद ये फंड्स आरबीआई के पास आए और आरबीआई ने ये फंड्स किसे ट्रांसफर कर दिए, एसबीआई को. तो एसबीआई को 40 रुपए पर ट्रांजेक्शन का मतलब 40,000 रुपए मिले एज अ कमीशन टू परफॉर्म दीज 1,000 ट्रांजेक्शंस. समझ आई ये बात? इज दिस पॉइंट क्लियर? इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू explain this particular topic because it's pretty easy. Still I have tried my level best to discuss it in much detail so that it should be clear and you can visualize actually how it works. So this is how it works. So in this particular case, if it is a physical transaction, if you are visiting the branch, then 40 rupees per transaction is the commission. And if you are completing this transaction in e-receipt mode, that means SBI will collect the fees. Now SBI is ready to collect the fees in the electronic mode and you are using the SBI channel to make the payment from your account. Funds will be debited, it will be transferred to SBI and from SBI it will be transferred to the respective state department. And this flow where every transaction is done in an electronic mode, there
you will be getting, or you as a bank you will be receiving 9 rupees per transaction as a commission. लेकिन ये जो 9 rupees per transaction वाला commission है ना, this has been increased. Physical wala is still 40, but this limit has increased by 3 rupees. This limit has increased by 3 rupees per transaction. Per transaction 3 रुपए increase किए गए हैं, and this increase is done as per the latest announcement which is done, and it will be applicable from today itself. It will be applicable from today itself. Moving on to the second point, pension payment. If a bank, let's say SBI, is paying the pension on the behalf of state government or center government, it's not only responsible to pay the pension, it is responsible to calculate the pension. Kitni pension banegi, kab di thi last pension, what should be the next pension. Bank is receiving your I would say guarantee, which they call on yearly basis, that you have to visit the bank at least once physically, so that you give that presence, you show your presence that I am alive. So all these criterias are fulfilled on the behalf of the government by this agent bank. Then if this agent bank is whole and sole performing the pension facility on the behalf of a state government, then for per transaction, this bank will not only receive commission, but this commission is pretty huge, which was earlier 75. Now this commission has increased by 5 rupees. It has increased to 80 rupees per transaction. But अगर सिर्फ और सिर्फ बैंक पेमेंट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि ये फलाना फलाना आदमी है, इस फलाने फलाने आदमी को इतना पैसा आपने पेंशन का ट्रांसफर करना है. सो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? प्लीज पे अटेंशन. What is government doing? Please pay attention. So there are two aspects. The first aspect is government has tied up with a bank SBI, and SBI is whole and sole responsible to carry out the pension distribution facility to a particular department on the behalf of the government. In this case, per transaction 80 rupees per transaction commission will be paid. But on the other side, if government is itself maintaining the pension details, and once government complete the pension details, then government transfer a chunk of money to SBI. Government transfer a chunk of money to SBI along with the list of recipients कि ये पैसा किसे देना है, along with the amount which is need to be transferred to all these recipients. So in this case, SBI is barely acting as a transfer agent. No calculation, nothing is done by SBI. In that particular case, commission is 6.5 paisa per 100 rupees. Now this 6.5 paisa has increased to 7 paisa for 100 rupees. Agar total ye chunk of money is 100 crores. If this chunk of money is 100 crores, which is ought to be transferred by SBI on the behalf of the government as per the details which are shared by the government. So in that particular case, against this 100 crore rupees, bank will receive a commission. What will be the commission? So commission is 7 paisa for 100 rupees. It will be 7 paisa into crore as a commission for 100 crore rupees. तो जब आप उसे solve करेंगे, you will be able to find the answer. तो आप देख लीजिएगा what will be the answer for this particular point. Calculation आप कर लेना. I'm not very good in the calculation वाला part. तो ये देख लो. What is this? Sir, other payments per 100 rupees turnover, which has now increased to 7 paisa per 100 rupees turnover. E-mode क्या है? I have explained you. I hope each and every point in this context is clear. Moving to the next, there is a special note. Full 75 rupees or 80 rupees per transaction only if bank handle the entire pension processing and disbursement. If only crediting pension qualifies for the payment rate, that is 0.65 paisa per 100 rupees, which is now increased to 7 paisa 100 rupees, and this transaction commission has increased to 80 rupees per transaction. Maximum 14 pension related transactions per week per pensioner is done. 12 monthly transactions and 2 arrears if required. Sharing of agency commission. So agency commission, मान लो 2 banks, they are collectively performing the functions on the behalf of the government, or they are performing the government functions
or government banking operations. अगर एक बैंक है, that will receive 100% of the commission. If we have two banks, then it will be split, and generally the split will be 75:25. कैसे? मान लो SBI को कोई काम दिया, मान लो SBI को कोई काम दिया, but SBI is not in a position to complete that entire task. If SBI is not in a position to complete that particular task, then what will happen? So in that particular case, SBI may tie up with ICICI and further, तो 75% SBI को मिलेगा, 25% will be transferred to ICICI. Is this point clear, everyone? If it is clear, just give me yes, sir. Last but not the least is your claim submission guidelines. So you will be submitting the claim to the RBI, and RBI will submit that claim to the government, or government will pass on the claim through RBI into the hands of the bank. Last but not the least is penalty. So penalty is going to be what? अगर आपने गलत claim के लिए request raise की in front of the bank, if you are raising a wrong request of claim or wrong claim request in front of RBI, then you will be charged with a penalty, and penalty will be bank rate plus 2%. Penalty will be bank rate plus 2%. So this is the last news which you need to remember. Ek news hai which I will be giving you as a homework. This news is related to UK Brand Finance has released India 100 ranking 2025. You can obviously read it and it will be pretty clear to you. There is nothing to explain in this particular news. Before I leave my session, guys, we at Testbook, we are running up with a now or never sale. If you are still in a dilemma that whether you want to clear the RBI examination or not, and if you ask me, then I would say this is the right time to start your preparation with us. Use code MADHAV in order to enjoy maximum discount, and you can subscribe our regulatory bodies courses at just 7699. Not only this, if you clear phase 1 as well as phase 2 examination, and if you qualify for the RBI Grade B interview, so whatever fees you are going to pay, we will pay back the same fees 100%, but this offer is valid only and only for today, I guess. Yes, it was applicable for yesterday only. Today it is not applicable, but if anyone has purchased the course yesterday, he or she would have enjoyed this particular benefit. So that will be all from my side. If you want to download the PDF will be available on this Telegram link. Scan the link, you can download the PDF, and I'll catch you in the next session. Bye-bye, take care, good luck, God bless you all.